I welcome you once again in session 2 of our GST Certification Course. Now, today's topic is Levy, Collection, Exemption and Taxable Person. To my understanding, this topic is very much relevant. Although we have the tendency of leaving certain sections, we directly, any law we read, we directly jump to the taxable event or the time of supply or place of supply. We generally are not very much interested or keen to learn the levy part, collection part or exemption part, unless it is very much practically applicable to us. But please believe me friends, आज का टॉपिक भी उतना ही रेलेवेंट और क्रूशियल है जितना कि टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई या डिमांड एंड रिकवरी या अपीलेट प्रोसीडिंग्स होने वाले हैं. सो प्लीज बी विद मी, रन अलोंग विद मी. आप पीछे भी मत छूटिए और आगे भी मत भागिए, मेरे साथ चलिए एंड आई एम श्योर आपको जीएसटी में बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो नाउ वी आर टचिंग अपॉन टुडेज पार्ट और उसमें ये कुछ रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो आज हम देखने वाले हैं. These are the relevant sections which we are going to touch upon today. First is section 2. Certain definitions we will be touching upon which will be affecting our discussion of the day. Next will be section 8 of the revised model GST law wherein levy and collections are mentioned. Section 10 taxable person. Section 11 power to grant exemption. Section 5 of the IGST Act. Earlier section 2, 8, 10 and 11 were belonging to CGST, SGST Act, and section 5 and section 6 are pertaining to IGST Act, which deals with levy and collection and power to grant exemptions. So moving further, section 8, which is the charging section, I would say. Charging section is most relevant section in any law, and it says there shall be levied a tax called the central or state goods and services tax. There shall be levied a tax called CGST or SGST. We all are clear about CGST and SGST that I have explained you yesterday. लेकिन आज मैं कुछ एक practical example से आपको समझाने की कोशिश करूँगा so that we have more clarity on the part. Let us go to the definition of tax first. It says there shall be levied a tax known as CGST or SGST. So what is tax? Tax is goods and services tax levied on the supply of goods and or services under this act and includes any amount payable under section 9 or subsection 10 of section 18. So any tax that is levied on the supply of goods or services under the act and including द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 9. सेक्शन 9 में कंपोजिशन लेवी है जो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, और सेक्शन 18 का सबसेक्शन 10 जो है इट रिलेट्स टू इनपुट टैक्स क्रेडिट. इतना ही बताऊंगा, इसकी बाकी जो डिटेल्स है विल बी टचिंग अपॉन देयर व्हाइल डिस्कसिंग द टॉपिक. सो इट इज टैक्स, डेफिनेशन ऑफ टैक्स अंडर द रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ. सो इट सेज देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी और एसजीएसटी. एज डिस्कस्ड यस्टरडे that there are going to be 4 levies after 4th March. First CGST, second SGST, third IGST and fourth UTGST, which will be applicable for union territories. Such tax shall be levied on all intra-state supplies of goods and or services. So it has to be levied on all intra-state supplies of goods and or services. So पहले मैं आपको कनेक्ट करता हूँ जो मैंने ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया, ओपनिंग स्टेटमेंट, कि हमने जो पहली स्लाइड देखी थी दिस वन, यहाँ पे सेक्शन 2, सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो पहले के 4 सेक्शंस हैं, दोज आर पर्टेनिंग टू CGST एंड SGST एक्ट, और सेक्शन 5 जो नीचे है और सेक्शन 6 है एंड में, दोज आर पर्टेनिंग टू IGST एक्ट. उसी को लिंक करके यहाँ पे बोल रहे हैं
कि देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स नोन एज CGST और SGST, बिकॉज वी आर रीडिंग CGST एक्ट और SGST एक्ट ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, meaning thereby any intra-state supplies you make, you will have to pay CGST and SGST. This we have discussed yesterday also, and I will clarify this today also with an example. Moving further, on the value determined under section 15 and at such rate as may be notified by central government or state government in this behalf, but not exceeding 14% on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed. So this is subsection 1 of section 8, which is the charging section. If we break this, there are 4 important things. First is, there shall be levied a tax on all intra-state supplies of goods and services. Number 1. Number 2, on the value determined under section 15 of the act. Number 3, at such rate as may be notified by central government or state government, but not exceeding 14% on the recommendation of the council. And 4th, and collected in such manner as may be prescribed. So now let us discuss one by one each of this. First limb is, there shall be levied a tax called CGST or SGST on all intra-state supplies of goods and services. Intra-state supplies, if within a state you are making any supplies, it becomes intra-state, and if outside state you are supplying something, it becomes a interstate, right? Dual GST is going to come whenever you are doing any transaction within a state. There will be parallel levy of CGST and SGST, whereas whenever a transaction is done between 2 states, that is interstate, it will be IGST, a single tax IGST. अब कल के साथ में इसको लिंक करूं, अगर कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखा था. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 246A एक आर्टिकल इंसर्ट हुआ जिसने इंपावर किया GST आने के लिए, और वहां ऐसा बोला था कि स्टेट और सेंटर, स्टेट और यूनियन बोथ विल बी एम्पावर्ड टू इशू or to release their own law pertaining to goods and services. Yes? और एक आर्टिकल था 269A. 269A ने स्पेसिफिकली बोला था कि इंटर स्टेट सप्लाईज के सिचुएशन में द सेंटर विल बी द ऑथराइज्ड पर्सन, सेंटर विल हैव द एम्पावरमेंट टू कलेक्ट, टू लेवी एंड कलेक्ट goods and services tax, and then thereafter it can be apportioned on the basis of recommendation of the council. This we have discussed yesterday. अब यहाँ आप इसको लिंक करें तो इंट्रा स्टेट सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट और सेंटर दोनों लेवी करेंगे, वो 246A में बोला था. इंटर स्टेट में 269 में बोला था. जो सेक्शन 5 बोल रहा है, सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, सिमिलर लाइन्स है. There shall be levied a tax called integrated goods and services tax on all interstate supplies of goods and services. So I believe now it is clear कि इंट्रा स्टेट जब भी होगा, विद इन अ स्टेट जब भी होगा, तो वहां पे आपको CGST और SGST दोनों लगाने, और जहां इंटर स्टेट होगा वहां आपको केवल IGST लगाना है.